Good morning, children. Yesterday I have already started a new chapter, that is gravitation. So today we will discuss on escape velocity. This is the most important topic for class 11. So what is this escape velocity? Escape velocity is the minimum velocity with which a body must be projected vertically upwards in order that it may just escape the gravitational field of the earth. इसका मतलब क्या होता है? अर्थ के एटमॉस्फेयर से, मतलब अर्थ से हमको बाहर, अर्थ के बाहर कोई ऑब्जेक्ट फेंकनी है तो हम उसको मिनिमम जितनी वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, दैट मिनिमम वेलोसिटी विथ विच वी कैन प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू और एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. कोई भी ऑब्जेक्ट को हमको अर्थ से बाहर फेंकना है तो एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी. दैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. मतलब वो अर्थ पे वापस नहीं आनी चाहिए, अर्थ के पूरे सरफेस को वो छोड़ते हुए बाहर निकल जाए. दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. जनरली एस्केप वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी, और वहाँ छोटा सा ई लिख दो उसके सबस्क्रिप्ट में. दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना है तो जितनी मिनिमम वेलोसिटी हमको देनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे. सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी. फर्स्टली वी विल कंसीडर द अर्थ टू बी रेडियस आर, capital R, and it is just a sphere in shape. Earth, just assume that Earth is in sphere shape of mass capital M, of radius capital R, and an object lies at the point P at a distance of x from the center of the Earth, that is shown in the figure. The gravitational force of attraction on the body at P is this: F is equal to G capital M into small m upon x square. ये हम पढ़ चुके हैं. That is from gravitation, universal law of gravitation. So the small work done in moving the body through small distance dx. अब इस ऑब्जेक्ट को P से Q तक भेजने के लिए हमको सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करना है, तो हम छोटा सा वर्क डन करेंगे. सो द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस PQ is equal to dx against the gravitational force is given by dW is equal to F into ds. dW is equal to F into dx. So we will put the value of capital F, that is from universal law of gravitation. F is equal to capital G, it means gravitation constant, universal gravitation constant, into mass of the earth, that is small m is the mass of the object upon distance from the object from the center of the earth. The total work done in moving the body from the surface of the earth is x is equal to r to a region beyond the gravitational field of the earth, x is equal to infinity will be. अब क्या बोल रहा है? अर्थ के सरफेस से आपको एक ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकना है, तो अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस क्या था सेंटर ऑफ द अर्थ से? दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ. इस आर से इन्फिनिटी तक ये ऑब्जेक्ट फेंकना. अर्थ के बाहर वो कहाँ से हमको नहीं मालूम, हम आई कांट और वी कांट मेजर द डिस्टेंस, सो इट विल बी जस्ट इन इमेजिन इट इज infinity. So total work done will be an integration of small work done within limit r to infinity. So now we will put the value of dW, that is capital G into mass of the earth into mass of the object upon square of the distance between them. तो यहाँ पे क्या होगा? G m को कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन r टू इन्फिनिटी. यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा? जब इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो x टू द पावर -2, सो इट विल बी इंटीग्रेट. सो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो फाइनली वी गेट 1/x, दैट इज अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट r. नाउ वी विल पुट द लिमिट. सो फाइनली वी गेट टोटल वर्क डन इज इक्वल टू Gmm अपॉन r. सो इफ escape velocity is denoted by VE of the body, then the kinetic energy half mve square
imparted to the body at the distance of the earth will be just sufficient to perform work done. We know about energy, that is capacity to do work. So this kinetic energy will be equal to the work done. Now we will equate this. So work done will be equal to the kinetic energy. So it will be half mve square. It will be G is equal to G, mass of the earth, mass of the object, upon R. So mass of the object and mass of the object, that is small m, cancel to each other. Finally we get V square is equal to 2 into capital G into capital M upon R. When this square is transferred in the right side, so it will be a VE is equal to under square root 2 capital G into capital M upon R. That is the expression of escape velocity in terms of gravitational constant. This is the expression for escape velocity in terms of universal gravitational constant. So again we will derive the expression for escape velocity in terms of acceleration due to gravity. We know about acceleration due to gravity and relation between acceleration due to gravity and universal gravitational constant. So it will be a small g is equal to capital G into mass of the earth upon square of the radius of the earth. So capital G into capital M की वैल्यू क्या होगी? Small g into r square. So we will put this value of G into M from equation 2 in equation number 1. So it will be a V is equal to under square root 2 G into r square upon r. So this r is cancelled to this r की पावर 2 मतलब r into r के फॉर्म में वो, तो यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा. Finally we get V is equal to under square root 2 into GR. So this is the final expression for escape velocity in terms of acceleration due to gravity. Clearly from this expression we find that the escape velocity does not depend on the mass of the body projected. It depends on the location from where the satellite is projected. Is that clear, children? From this expression it is clearly that escape velocity does not depend on the mass of the earth. It is only depend on the location from where the satellite is projected. Is that clear, children? Now for the earth, small g is equal to 9.8 meter per second square. Radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter. Escape velocity is equal under square root 2gr. Now we will put the value of g and r. Finally we get escape velocity for the earth is 11.2 into 10 to the power 3 meter per second. So 10 to the power 3 in terms of kilometer. So escape velocity is equal to 11.2 kilometer per second. Now we will derive the expression for orbital velocity. Orbital velocity is the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth. अब देखो बच्चों, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ मोशन कराने के लिए, उसके घुमाने के लिए, रिवॉल्यूशन के लिए जितनी मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होती, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो हियर वी विल टेक अ capital M, that is mass of the earth, small m is the mass of the satellite, and height h is the height of the earth surface and path of the satellite, and VO, that is orbital velocity. जैसे हम एस्केप वेलोसिटी के लिए V लिखते हैं, वैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए VO लिखेंगे. And r is the radius of the earth, capital M is the mass of the earth, and h is the height of the satellite above the earth's surface. Total r plus h क्या होगा इसमें? Orbital radius of the satellite. According to the law of gravitation, that is universal law of gravitation, the force of gravity of the satellite is F is equal to G into capital M into small m upon square of the distance between them, that is r plus h. So that ये क्या है? Circular path motion कर रहा है. So here a force is applicable, that is called centripetal force required by the satellite to keep it in the
कीप इट इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी सैटेलाइट को उसके सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² अपॉन आर। ओके, अब ध्यान देखेंगे mv² अपॉन आर होता है हियर mv² यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और आर है डिस्टेंस, क्या? आर प्लस एच। सो इन इक्विलिब्रियम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जस्ट प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल करेंगे, कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल कर देंगे, फाइनल वी गेट VO² इज इक्वल टू GM अपॉन आर प्लस एच। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज VO is equal to under square root capital G into M upon R plus H. This is the orbital velocity in terms of universal gravitational constant. Again, we will derive the expression for orbital velocity in terms of acceleration due to gravity. Again, we will put the value of capital G into capital M in terms of G. Okay, so it will be a GR square. So finally, we get V naught or VO is equal to R under square root G upon R plus H. So when the satellite revolves close to the surface of the earth, H is equal to 0 and orbital velocity will become a V naught is equal to under square root G upon R. अगर satellite just earth के surface के nearest है तो. Finally, we will calculate the value of VO. Okay, so we know that about small g, that is equal to 9.8 meter per second square. Capital R, that is radius of the earth, 6.4 into 10 to the power 6 meter. Now we will put the value of this G and R in this term, in this formula or in this equation. Finally, we get VO is equal to 7.92 kilometer per second. This is the minimum orbital velocity for any satellites on the surface of the earth, on the above of the surface of the earth. Some important points related to orbital velocity. From equation number 1, it is clear that orbital velocity does not depend on the mass of the satellite. It is decreases with the increase in the radius of the orbit with increase in the height of the satellite. It means R बढ़े चाहे H बढ़े, दोनों के बढ़ने से orbital velocity की वैल्यू कम होगी. And orbital velocity depends on the mass of the radius of the planet about which the satellite revolves. यहाँ पे हम लोग अर्थ की बाहर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अर्थ का रेडियस लिया गया. इसका मतलब ये जहाँ भी आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे तो जिस प्लेनेट के चारों तरफ घुमान जाते हैं उस प्लेनेट का रेडियस पे भी ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी? This is the expression for escape velocity. This is the expression for orbital velocity. Now we will divide this equation from this equation. So finally we get V upon VO is equal to under square root 2GR upon under square root GR. So GR to GR to cancel to each other. Then finally we get V upon VO is equal to under square root 2. So after cross multiplication we can say that escape velocity is the root 2 times of orbital velocity. Okay children?